Hello everyone. How we can create the variables in Java programming, guys? What is the syntax for variable creation? Data type, data type, then variable name, semicolon. This way we can create the variables in our Java programs. So how many types of variables in Java programming? Three types of variables. Local variable, then instance, and static variable. Okay, these are the three types of variables in Java programming. So now we want to declare the multiple variables in our Java programs, like to declare 20 variables, 30 variables, 100 variables, up to the 100 variables in our Java program with a similar type. With a similar types means which type of variables we use in Java, primitive and non-primitive. Both types of variables we can use in our Java programs. Now we are creating a integer type variables. How much we are created a integer type variable in our program requires the 20 plus variables with the same data type, guys, with the same data type. Okay, with the integer values, 20 variables required in our programs. Then we go for declaring the variables in our program. How we can declare it? One by one, 20 variables we can declare in our programs. Hard coded, we declare the 20 variables in our Java program. How? A1, now second is a A2 with the same data type. A2, A3, A5 up to the A20 variable. Which type? Integer type. Okay, now there how many variables we declare over there, guys? 20 variables were declared there, where 20 variables are created. So for 20 variables, the memory is required for every variables. Okay, in a RAM. For every variable, memory is created, allocated for every variables, and all the value is stored regarding to their memory location for every variable, guys. So then which type of variables were used there? Now guys, which kind of variable over there we use? There we are used the integer variables only. Similar types variable, how much variables were used there? 20 variables. Now 20 times we create the variables in our Java programs. How many times we created there, guys? 20 times means A1, then A2 up to the A20. How many lines required for declaring the variables there? We use the 20 lines of a code in our program. So again and again, repeatedly you declare the variable with the same data types. The time is consuming there means more times where you use the same data type for declaring the value. Integer, int for 20 times. Same data type. And name of the variable is different. But the value which type? Value is a only similar value. There we use the similar values. 20 times we use the similar data types. Integer value. 20 times we use their value with the same data type, but with name of a different variable, with the different variable names. Then that problem we overcome by using the array concept in Java programming, guys. In C plus also there is a array concept is used to indicate, to shows the multiple elements of a same type. For the same type elements were stored by using the, we represent it by using the array, guys. So in our program, if we do not use the arrays concept in our program, then how we can implement our application? See, okay, so this is our class test. If I have required 20 elements, या तो 100 elements with a similar type,
सेम वैल्यू से कितने एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है इन आवर प्रोग्राम फेज 20 या 100 elements required with the same data types. Now we are creating a A1, then int A2, int A3. Okay, now int A4. Like that, we creating other multiples variables in our program up to the int A100. How many elements were created over there? There we created 100 elements. Means where how much line of code we have created there, guys? Over there we have created 100 sub line of code created over there. Okay, how many times were created variables? 100 times. The time is taken, which process is there? Time taken process is there, means time consuming, means multiple times, means how many times were created the variables? 100 times with similar data type. एक ही डेटा टाइप से हम अगर 100 एलिमेंट्स बना रहे हैं, 100 एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि मानो कि स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रोल नंबर्स हमें requires 100 students of roll numbers want to show, okay, in our programs. 100 numbers of account holders names shown in our programs. Then हम 100 times of variables create करेंगे guys. If we are doing that thing, तो उसमें क्या होगा कि हमारा टाइम ज्यादा, वक्त हमारा ज्यादा लगेगा कि हर टाइम में उसे बनाने के लिए 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो 100 लाइंस ऑफ कोड लगेगा। तो उसमें क्या हो रहा है, कोड ऑप्टिमाइज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, राइट। वहां पे लेंथ ऑफ द कोड इज इंक्रीज, लेंथ ऑफ द कोड इज इंक्रीज। अगर लेंथ ऑफ द कोड इंक्रीज हो रहा है तो इट इज सुटेबल टू इन अ रीडेबल फॉर्मेट, मींस इट इजीली वी कैन मेंटेन इट। नो, वी कैन इजीली मेंटेन that code if their number of lines of code we have implemented with the similar types of elements. अब यहाँ पे देखो 100 elements हम 100 variables यूज कर रहे हैं in our program with the similar data types, तो उसमें क्या लेंथ ऑफ द कोड बढ़ रहा है। अगर कहीं कोई एक्सेप्शन आ रही है, इजीली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, राइट, देन उसमें हमारा टाइम भी जा रहा है कि हर टाइम है ना सेम डेटा टाइप से वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंपल वे है कि बाय यूजिंग, अगर हम एरे कंसेप्ट यूज करें बाय यूजिंग ओनली सिंगल वेरिएबल, अगर सिमिलर टाइप वैल्यू हो तो जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम या तो अकाउंट नंबर इंटीजर नंबर्स, देन रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटीजर होते हैं, तो 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रोल नंबर हमें डिक्लेयर करने हैं बाय यूजिंग वन वेरिएबल रोल नंबर through the concept of array. By using the concept of array we can declare, we can mention it is in a single line. How, what is the syntax of array declaration? Now int, if we use the array concept there, int array name roll number. Now see how many elements we can store here, number of elements we can store here. So we having 100 student roll number, then we can store there how to up to the 100 by using the curly braces open and close. Within this curly braces we can put the roll numbers 10, 11, 12, 13, 14, 15, like 16 up to the 100 roll number. Okay, where stored it by using the single variable. How many variables were created over there, guys? Only one variable is created. Only one variable is created and represent the 100 roll numbers of a students. You can represent the 100 roll numbers of a student by using one variable name. But now through the variables without the array concept अगर जाएंगे हम, if we go the without the array concept, तो 100 रोल नंबर हमें रिप्रेजेंट करने हैं ऑफ द स्टूडेंट्स,
देन हमें 100 टाइम्स ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे इंट रोल नंबर 1 is equal to 10, like this line of statement, how to up to the 100 तक हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे फॉर रिप्रेजेंट क्या 100 रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, रिडंडेंसी हमारी रिड्यूस हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि हमें इजीली हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, हमारा एरर कहीं आ रहा है तो इजीली हम इसे रीड नहीं कर पा रहे, हम मेंटेन नहीं कर पा रहे इसे इजीली। अगर सिमिलर एलिमेंट्स हो तो विद द सिमिलर एलिमेंट्स, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो थ्रू बाय द हम वेरिएबल्स ही जाएंगे, बट सिमिलर एलिमेंट स्टोर करना है, सेम वैल्यू स्टोर करनी है, सिमिलर वैल्यू स्टोर करवानी है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है विद अ सिमिलर टाइप ऑफ अ सिमिलर टाइप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। तो देन हम which concept we use there, we use there over there, we use the array concept। array concept कब यूज करते हैं, जबकि मल्टीपल नंबर्स होते हैं विद द सिमिलर टाइप, विद अ सिमिलर टाइप। तो सिमिलर टाइप के अगर नंबर ऑफ वैल्यूज यूज करनी है इन आवर एप्लीकेशन, इन आवर एप्लीकेशन मींस आवर प्रोग्राम इन आवर सॉफ्टवेयर, ओके, देन हम किसका यूज करेंगे गाइस, array कंसेप्ट का यूज करेंगे। array में क्या होता है कि देयर वी यूज ओनली वन वेरिएबल टू रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यूज। व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज, सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज। एक ही वेरिएबल बना दो, उससे हम मल्टीपल वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We can representing the multiples value by using a single array name। एक array बना दो, उससे रिप्रेजेंट कर दो। जैसे कि हमारा क्लास होती है, क्लास में वन टीचर है, रिप्रेजेंटिंग ऑल दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स, राइट, वन वेरिएबल पॉइंटिंग टू द मल्टीपल वैल्यूज। यहाँ तक समझ में आया गाइस, हमें क्यों यूज करना है array इन आवर जावा प्रोग्रामिंग। अगर सिमिलर टाइप की वैल्यूज होगी, मल्टीपल वैल्यूज हम सिमिलर टाइप की यूज कर रहे हैं, सिमिलर वैल्यूज वी आर यूजिंग प्रोग्राम, then we go for a array concept, then we use the arrays to develop to manipulate that logic। नंबर ऑफ टाइम्स हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं सिमिलर टाइप के, तो कितना सारा बड़ा कोड बन जाएगा, 100 लाइंस ऑफ कोड फॉर किसके लिए रिक्वायर्ड हो जाएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हो जाएगा। देन आफ्टर दैट वी आर डेवलपिंग अवर अनदर लॉजिक, नेक्स्ट लॉजिक। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर प्रोग्राम इज इंक्रीज। उससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। इफ विदाउट द एरे, अगर हम सिमिलर एलिमेंट्स, सिमिलर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, मल्टीपल्स। यस, Hello. गेटिंग माय वॉइस गाइस, गॉट इट? Hello, sir. I have Yes, one sir. question. Yes. Sir, can we use number of array is single same program? Number of arrays, yes, we can use different types of arrays we are created, integer, byte, short, boolean, string. Okay. Okay. These type of values required in our application, regarding that we can create a multiple arrays. So what is the syntax of variable array creation in our Java programs? Before that, see the theories. Array in Java. An array is a collection of similar type of elements which has contiguous memory location. Contiguous memory locations means with a one by one memory is allocated for the variables. Java array is an object which contains elements of similar data types. Additionally, the elements of an array are stored in a contiguous memory location. It is a data structure where we store similar elements. Okay, array is a one kind of a data structure. There we use the similar values. We can store only a fixed set of elements in a Java array. Okay, array की size क्या होती है? Fixed होती है. Only we know the how much of elements used in our applications. That regarding to that we create the array.
We can store only a fixed set of elements. Array in Java is index based. Array किस बेस से वर्क करता है? On the basis of which index basis it is working, guys. Every elements of array is stored into the memory on their index value. Array in Java is index based. The first element of the array is stored at the index 0 index. Second element is stored into the first index, and so on like that. All the elements is kept placed into the index value. In Java, array is an object of a dynamically generated class. Array क्या होता है कि array is one kind of object in Java, guys. Array is a object. Inherits the array class है वो किसे inherit करती है, guys? By default, it inherits the object class and implement the clonable and serializable interface. We can store primitive values or object in an array. So which kind of values we can store in array, guys? We can store the both types of values in a array, primitive as well, object reference value also. Object value we can store by using the array. तो array किस टाइप का बनेगा, guys? Homogeneous element का बनेगा, similar elements का होंगे. Okay. Can we use a heterogeneous elements? Distinct elements use कर सकते हैं for the array? Cannot use the heterogeneous elements storing the in an array concept. Storing the element in an array. Okay. What is the syntax of array declaration? How we can create? So data type, variables का syntax क्या होता था? What is the syntax of variable? Data types, variable name, and semicolon. That is the syntax of a variable declaration. Now, data types, then variable name. See, and semicolon. This is the syntax of a variable creation in Java. So how we create the array in our Java programming? What is the syntax? Data types, then square bracket, then array name and semicolon. This way we declare the array in our program. This way we create the array in our program. Data types, one of the data types we use over there, primitive as well, non-primitive. Then array name. Second, data type, bracket, array name. Okay. Then data types, array name, bracket. These different ways we can create the arrays in our Java programming. Square bracket after the data types रख सकते हैं, या तो हम after the name of the array we can use the array square bracket. Okay. So now want to create a string value array, then we use a string as a data type, square bracket, then array name of a student. Okay, this is the declaration part. So how we can initialize the arrays in Java program size? तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? Data types means int, then array name, we are taking the a as array name, is equal to opening bracket and closing semicolon. Here pass the value. Which value we pass there? We pass the integer values.
because array is a collection of similar elements. Okay, up to the end, we pass the values there. Right? There is no limit how much of elements stored into the arrays, guys. Number of elements we can use over there. See, this way we can initialize the arrays, guys. See, simple programs of, we will see the simple program on array. See, we require sir 10 student roll number. Then we create for that array int roll number is equal to. Now, how much elements were required? Records up to the 10. Not one, not two. Okay, up to the 10 records. 103, 104, 105, 106, 7, 10. So how many roll numbers are represented there? 10 roll numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. We are created a one variable. Name of that variable array is a roll number is a array name, and which type of roll number array is holding the value? It holding the value is type integer type. Okay. See guys, can we hold the, or there any floating value, guys, like a 10.5? No, there is a compilation error. Only किस टाइप के एलिमेंट्स का ग्रुप होता है array? Only homogeneous elements. It taking the only similar values. यहाँ पे अगर कोई string value pass कर सकते हैं, can we pass any string value like Java? Now, but it is not possible. Okay, see, type mismatch. Cannot convert from string to int. Integer string को integer में convert कर सकते हैं? No. Okay. Now, अब हमने तो बना दिया है, एक array बना दिया है, रोल नंबर नाम से एक array बना दिया है, right? अब इसे read कैसे कर सकते हैं? How we can read it? How can print all this result on our console? In the console, how we can print it? How can call every values in our Java programs? First thing, every elements is loaded into the memory in the basis of a index value. What is the size of this array, guys? What is the size of this array? We know the 10 is the size of the array. Once we know the array size, then we create the arrays in our Java programs. In advance, already we know the size of the elements. Then we create the arrays. Now, what is the size of array? We have a 10 size of the array. Take the main method for the implementing logic. Okay. How to know size of the array in Java program says this roll number dot to call which function? Length function. Length is a variable available by default. It is present in our Java program. Syntax declare to complete the local variable declaration. Okay. Then int size of elements. Okay. How to calculate the size of the array in Java program type? By calling the length variable, by calling the length function. Okay.
This is a predefinedly available in our Java. Hit it when roll number work as an object. Array is an object in Java programs. We are using it like an object. Roll number, hit the dot operator, dot, called the length. From this line, now guys, from these lines we get the length of the size of the our array. What is the size of the array? We have already known the 10, but now we go to logically now print the size of the array. Follow size variable. See what is the output of this line. 10. 10 is the size. By calling the length, we find out the size of the array, and it is stored into the size variable. Now, size of any kind of things in the form of a integers, then we will use over there integer as a variable. The size of the array in the form of a fractional number, no, it is not possible. And every time we use a data type for a size is int. Now we declare and initialize the array in our test class. Now, how we can read all this value? How we can print all the array value on a console? Every value of an array is stored into the memory in the on the basis of a index value. What is the size of the array, guys? 10. 10 minus 1. What is the result? 9. 9 is the result mean index value. Last index of that array is a 9. 9 last index value of that array is a 9. Okay, because index is starting from a 0. Then size minus 1. तो उससे क्या मिलेगी हमें गाइस? साइज माइनस 1 इंडेक्स वैल्यूज में पता चलेगी। ओके, ऑफ द एरे। अब साइज क्या मिले हमें यहाँ पे? इंडेक्स वैल्यू क्या मिल रहा है? 9। 9 हो रही है तो अब कहाँ से इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है एरे की? 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 to 9 तक सारे एलिमेंट्स उस कंटीन्यूअस मेमोरी में स्टोर हो गए, हिप मेमोरी में। तो हिप मेमोरी में कैसे स्टोर हो गए गाइस? Adjacent, one element is adjacent stored with another. Okay, one other, सारे एलिमेंट जैसे के वैसे सारे हमारे एरे में स्टोर हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडेक्स वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स वैल्यू। ओके, 10 एलिमेंट्स एरे हमने बना दिया है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके, values value then 20 30 40 0 60 70 80 90। okay, if we हमारी values, these are the values array, these are the values। अब इंडेक्स वैल्यू
यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स सारे का 0 जीरो, जीरो पे कहाँ तक आएगा, साइज -1 मीन्स 9 तक, 9 लास्ट इंडेक्स इज 9। वेरी गुड। ओके, तो इंडेक्स वैल्यू ये होती है हमारी इंडेक्स, इंडेक्सेस, इंडेक्स ऑफ तो एवरी एलिमेंट कैसे स्टोर होता है हमारे मेमोरी में गाइस, अरे का उसके इंडेक्स बेसिस पे। हाउ वी कैन रिट्राइव इट, हमें इसे अगर कंसोल पे प्रिंट करवाना है, हर एक वैल्यू अगर कंसोल पे प्रिंट करनी है तो वी कॉल द इंडेक्स वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट। हम इंडेक्स वैल्यू को कॉल करेंगे ना, तो उस इंडेक्स वैल्यू पे जो भी वैल्यू प्लेस होगी, जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट वहाँ पे स्टोर होगा, उस एलिमेंट पे लोडेड होगा, तो वो एलिमेंट क्या होगा, कंसोल पे प्रिंट होगा, राइट, उसका आउटपुट मिलेगा। वैल्यूज स्टोर्ड इनटू द कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटीन्यूअस मेमोरी मींस 10 के बाद किसका स्टोर हुआ है मेमोरी में, 20 is stored into the memory, loaded into the memory, 30 is loaded। adjacent means हर एक के बाद एक एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम, we can say that this is the contiguous memory location। ओके, अब ये सारे के सारे मेमोरी लोकेशन को who is pointing, what is the name of our array guys, our array name is a roll number, roll number is our array name, now it is pointing to whole record, every element is pointed by the roll number. There is a 0 and 1s, in a 0 and 1s format memory location is created, and that memory address is holded in our array name. This is the name of that memory location, roll number. This single variable, this single variable hold the all the, this single variable holding the 10 elements of which type, similar types। इस तरीके से मेमोरी में एरे क्रिएट होता है। नाउ दिस वे मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। ओके, एवरी एलिमेंट इज लोडेड एडजेसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एलिमेंट, जो भी एग्जिस्टिंग पहला लोड हुआ 10, तो उससे एडजेसेंट 20 लोड होगा मेमोरी में, 30, 40, 50 इस तरीके से 100 तक, उसे बोलते हैं कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। नाउ तो सभी के सभी एलिमेंट्स किस बेसिस पे वो लोड हुए मेमोरी में, इंडेक्स वैल्यू के बेस पे, सारे के सारे एलिमेंट्स बेसिस ऑन इंडेक्स वैल्यू, एवरी एलिमेंट इज लोडेड इनटू द मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडेक्स वैल्यू। ओके, अब साइज कितनी है, 10 है, 10 - 1 मीन 9, 9 तक इंडेक्स वर्क करेगा। ओके, नाउ ऑल दिस लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल वेरिएबल। अगर हम टू द वेरिएबल्स अगर प्रोग्राम डेवलप करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हमें 10 वेरिएबल्स यूज करने होते हैं, और 10 वेरिएबल्स के लिए मेमोरी क्रिएट होती है हमारे रैम में। हमारे रैम में क्या होती है, 10 टाइप्स मेमोरी ब्लॉक इज क्रिएटेड, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक ही ब्लॉक क्रिएट हुआ है, एंड ओनली वन वेरिएबल इज रिप्रेजेंट द मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम। ओके, so how can retrieve it, यहाँ तो प्रॉब्लम। अब इसे हमें अगर प्रिंट करवाना है, SO first way, what is the array name, roll number is the array name, and square bracket and index value, किस इंडेक्स का नंबर हमें प्रिंट करवाना है, 0 इंडेक्स का, तो यहाँ पे हमने 0 इंडेक्स पास कर दिया।
अब रिजल्ट क्या होगा गाइस यहाँ पे, व्हाट इज द रिजल्ट, यू कैन रिट्राइव द एलिमेंट्स, हाउ कैन फाइंड द साइज ऑफ द array, साइज किस तरीके से फाइंड करते हैं, दिस वे वी कैन फाइंड द size of the array. Okay, then how to print the array elements on a console, by calling their index value. What is the output, zero index पे कौन सी वैल्यू रहेंगी guys, 101. 101. Okay, very good, 101. Now see the output, okay 101 करके आउटपुट मिला हमें. yes, अगर हमें कोई भी इंडेक्स वैल्यू का हमें पता चल गया है कि हमने पता कर लेने यहाँ पे व्हाट इज द साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे 10. ओके 10 माइनस 1 मींस 9, 9 तक इंडेक्स क्रिएटेड है एरे के, राइट. तो हम कोई भी इंडेक्स वैल्यू हिट कर सकते हैं, कोई भी इंडेक्स वैल्यू हम कॉल कर सकते हैं. देन हम यहाँ पे अगर कॉल कर रहे हैं तो रोल नंबर एरे ऑफ 5, एरे इंडेक्स जो 5 पे इंडेक्स वैल्यू 5 के हमें एलिमेंट फाइंड आउट करनी है. तो व्हाट इज द आउटपुट, 5 पे क्या रहेंगे, 105 होगा कि 106 106 रिजल्ट मिलेगा, राइट. अभी ये हुआ हमारा एक इन द केस अप टू द इंडेक्स वैल्यू. हमें पता है कि इंडेक्स वैल्यू क्या है, लास्ट इंडेक्स वैल्यू है 9 करते हैं, राइट. रेदर देन अगर कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं एक्सेट ऑफ द इंडेक्स वैल्यू, देन यहाँ पे हमने कर दिया है कि रोल नंबर एरे ऑफ 10 इंस्टेंस इंडेक्स वैल्यू के हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू फेच करना चाहते हैं, राइट. वी आर फेचिंग द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 10 एलिमेंट्स. तो 10 इंडेक्स है क्या अवेलेबल नाउ गाइस, देयर No, sir. देयर इज नो 10. देन कंपाइल टाइम एरर आ रही है गाइस, देयर इज एनी कंपाइलेशन टाइम एरर, देयर इज एनी कंपाइलेशन टाइम एरर. नाउ एट रन टाइम कोई एरर आती है क्या, देखते हैं. देयर इज एनी कंपाइलेशन रन टाइम एक्सेप्शन, यस देयर इज द कंपाइलेशन टाइम एक्सेप्शन. तो किस टाइप की एक्सेप्शन हुई है गाइस, नाउ सी java.lang, lang एक पैकेज का नाम है, lang array index out of bounds exception करके एक्सेप्शन मिली है. कब मिल रही है गाइस, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम. क्यों, क्योंकि वी आर हिटिंग द 10 इंडेक्स वैल्यू. our index last index of our array is 9, but now we are fetching the 10th index value. At array list is a package name dot test is a class name, our class name. Okay, and inside a main function test dot java line number 15. line number 15 में क्या करते हैं guys, हम we are hitting a 10 index value. तो 10 तक है क्या हमारा array guys, नहीं, हमारा array कहाँ तक है, 9 इंडेक्स वैल्यू तक है. अगर हम मोर इंडेक्स फेच कर रहे हैं ग्रेटर देन एरे साइज, जो भी हमारी एरे साइज है 10 एलिमेंट की एरे साइज एंड लास्ट इंडेक्स इज 9 एंड वी आर फेचिंग अ ग्रेटर देन 9 वैल्यू. ग्रेटर देन 9 वैल्यू अगर हम फेच करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मींस एरे इंडेक्स के बाहर का एलिमेंट है. ओके, मींस वो साइज है. उस टाइम दिस टाइम ऑफ एक्सेप्शंस वी गेट. अगर हम कोई भी जितनी जो साइज है हमारी एरे की इंडेक्स साइज इंडेक्स वैल्यू, तो उससे ज्यादा अगर कोई एलिमेंट वैल्यू फेच करेंगे हम इंडेक्स वैल्यू, तो उस टाइम आएगा एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन करके रेज होगा. तो ये क्या होता है कि अगर इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर, तो वहां पे पूछते हैं कि हाउ मेनी एक्सेप्शंस इन योर जावा प्रोग्रामिंग, हाउ मेनी एक्सेप्शंस यू आर फेस्ड इन योर जावा प्रोग्राम. तभी तो आपको विद द एग्जांपल आपको exceptions answer देने होंगे. then you will say that array index out of bound exception, वो तुरंत पूछ लेंगे कि when that exception will occur. तो उस टाइम कोई भी एक array का प्रोग्राम बनाना है ना, सिंपल सा 2-3 इंडेक्स का, उसमें रिट्राइव करके फेच करके देख लेना मोर देन द इंडेक्स वैल्यू. ओके, ग्रेटर देन इंडेक्स. गेटिंग गाइस? Yes, sir. Okay, take a screenshot.
completed guys? Yes, sir. Yes, sir. हमने तो क्या किया अभी तो थ्रू द इंडेक्स एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू को हमने प्रिंट किया बाय यूजिंग द सिंबल डॉट प्रिंट एलिमेंट मींस 10 वैल्यूज है तो 10 टाइम्स हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना होगा. ओके, कैन वी रिड्यूस दिस काइंड ऑफ hard code guys? Yes, we can reduce this overcome by using the for loop. We can retrieve every element of the array by using the for loop. तो for loop क्या करेगा? Once it is start, it is means ये सारे के सारे values क्या कर देंगे? वो सारे के read कर लेगा. Once if the condition is true, if the condition is true, up to the false conditions, all the elements of that array, it is read. It's read. Okay. तो यहाँ पे वन बाय वन सिंगल स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होगी हमें कि जीरो इंडेक्स की वैल्यू क्या है, टू इंडेक्स की वैल्यू क्या है, थ्री इंडेक्स की वैल्यू क्या है. ओके, हम इसे फॉर लूप से भी कर सकते हैं. हाउ कैन डू इट? वी डज इट बाय यूजिंग द फॉर लूप. नाउ फॉर हमें फॉर लूप कब लगाते हैं गाइस? हमें पहले से इन एडवांस हाउ मेनी इटरेशंस वी हैव, मींस हमें पहले से पता है कि ऑलरेडी कितने इटरेशंस होने वाले हैं. हाउ मेनी टाइम्स लूप विल वर्क, इज वर्किंग नाउ. हमें कितने टाइम्स लूप वर्क करवाना है. अगर ऑलरेडी हमें पता है तो हम किस लूप का यूज करते हैं? फॉर लूप का यूज करते हैं. अगर हमें पता नहीं है कितने टाइम लूप एग्जीक्यूट करवाना है, देन वी व्हाइल लूप से करवा लेते हैं. ओके, बट हमें पता है कि कितने टाइम्स लूप वर्क करने वाला है. इन एडवांस पता है ना कि वी हैव साइज ऑफ द एरे. यस, वी हैव साइज. हम उस जितनी साइज है हमारी वहां तक हमारा लूप वर्क आउट करेगा. नाउ सी इन आई इज इक्वल टू, अब देखो एरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस? एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो वैल्यू. अगर यहाँ पे हम वन वैल्यू लगा देंगे आई इज इक्वल टू वन, तो सारी वैल्यू कहाँ से फेच करेगा गाइस? 102. यस, वन से करेगा. वन इंडेक्स से करेगा, 1 to 9 तक करेगा. बट वन इंडेक्स पे वैल्यू क्या है हमारी गाइस? 102 है. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? जीरो लगाएंगे. अब देखो आई कहाँ तक वर्क करना चाहिए हमारा फॉर लूप? आई इज लेस देन 10. 10. तो हमें पर्टिकुलर साइज तो पता ही नहीं, तो डायरेक्टली हम हिट क्या कर देंगे यहाँ पे? एरे नेम. तो यूज देयर एरे नेम डॉट लेंथ. ओके, देन आई प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट होना चाहिए ना हर टाइम. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? रोल नंबर डॉट लेंथ. यहाँ पे रिजल्ट क्या जनरेट होगा गाइस? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट? दैट स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होगा? 10. करेक्ट. तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते कहाँ चले जाएंगे? 10 तक होगी. 10 इज लेस देन 10. 10 से लेस है क्या गाइस? नो. तो वहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे. मींस अपना लूप कहाँ तक वर्क करेगा, वर्कआउट करेगा? 9 तक. 9 तक. ओके, अगर 10 तक वर्क करवाना है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? इक्वल टू देना होगा. आई इज लेस देन इक्वल टू, आपने ऑपरेटर्स पढ़ लिए ना? आई इज लेस देन इक्वल टू रोल नंबर डॉट लेंथ. मीन्स वैल्यू क्या हो जाएंगे? अगर आई की वैल्यू 10 होती है, 10 इज लेस देन 10 नहीं है, बट 10 इज इक्वल टू द 10, कंडीशन ट्रू होगी. तो उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा गाइस? आफ्टर दैट कंडीशन we get array index out of bound exception because we are reading the 10th index value. ओके, जो कि हमारे array में नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना है. देन sy रोल नंबर array ऑफ. अब देखो कि इंडेक्स हम क्या करते हैं कि array की वैल्यू कोई भी फेच करनी है तो हम पहले तो इंडेक्स को कॉल करते हैं. राइट, तो कॉल द इंडेक्स. यहाँ पे रोल नंबर हमारा तो array नाम हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट में array सिंबल, उसमें क्या देंगे हम?
इंडेक्स वैल्यू देना है हमें, राइट। तो अब इंडेक्स जो है हमारा, तो अब किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, आई के फॉर्म में। ओके, अब क्या हो गया, आई में सारी वैल्यूज 1 by 1 इंक्रीमेंट होती रहेगी। अभी तो नाउ इनिशियल, विच इज द इनिशियल वैल्यू इन आई, 0 इज द इनिशियल वैल्यू फॉर द आई। ओके, आई में आप कौन सी वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू 0 इज द वैल्यू। अब 0 है तो वहां पे आउटपुट क्या मिलेगा गाइस। अब टेल एनीवन ऑफ यू गाइस, अभी फॉर लूप किस तरीके से वर्क करेगा, हाउ दिस फॉर लूप विल वर्क गाइस। यहाँ पे और पहले फर्स्ट, यस वेरी गुड, वो पहले 101 प्रिंट करेगा, फिर आई पे प्लस 1 करेगा तो इंडेक्सिंग 1 हो जाएगा, तो उसके बाद 102, फिर इंडेक्सिंग आई प्लस तो 3 2 हो जाएगा तो 103 प्रिंट करेगा। तो वो प्लस प्लस केस में चलते जाएगा वो। ओके ओके। तो इनिशियल जो पार्ट है वंस एग्जीक्यूट होगा, मींस वो जो बता रहे हैं उनके हिसाब से, यहाँ पे वंस आई इज इक्वल टू 0 पुटअप हो गया, असाइन हो गई वैल्यू, लोड हो गई फॉर द आई, देन ये क्या करेगा, सेकंड स्टेज होती है कंडीशन चेक करना। अब कंडीशन चेक हो गया, पे आई की वैल्यू इज 0, 0 इज लेस देन 10, मीन्स यहाँ पे हमने हिट किया तो साइज क्या मिली है ना, 10 मिली है ना। 0 is less than 10, yes it is less than 10, condition is true, then cursor कहाँ आएगा, inside the loop। अब inside the loop how many statement is over there, there is a only one statement, जो भी आएगा उसका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा 101। ओके, देन उसके बाद का आ जाएगा, इंक्रीमेंट के लिए जाएगा हमारा लूप, मतलब जो भी कर्सर है आई प्लस प्लस क्या आएगा, आई 0 था फर्स्ट, इसमें इटरेशन में क्या था, 0 था, अब वो क्या हुआ 1 हो गया है। अब 1 कहाँ होगा, यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी कंडीशन, कंडीशन इज 2 इज और फॉल्स, कंडीशन इज चेक दे, यहाँ पे 1 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू, यहाँ आ जाएगा इनसाइड अ बॉडी 102, देन कहा जाएगा इंक्रीमेंट के लिए, इनिशियलाइजेशन पार्ट में जाएगा क्या होगा, इस नहीं जाएगा, वंस आते टाइम में वो इनिशियलाइज हो जाता है, देन इंक्रीमेंट एंड कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड कंडीशन। जब इंक्रीमेंट होने के बाद एट, तो वहाँ पे क्या होगा, कंडीशन वंस कंडीशन इज अ फॉल्स, कंडीशन फॉल होगी, फॉल्स हो जाएंगे ना तो इनसाइड नहीं आएगा वो, इनसाइड द लूप आएगा क्या, नहीं, वहां से इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। और उसके बाद आफ्टर द फॉर लूप देयर इज एनी स्टेटमेंट्स इज अवेलेबल और नॉट इन आवर कोड, अगर अवेलेबल्स हो गए वो सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो बाहर आ जाएगा फॉर लूप के बाहर, वो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो इट कम आउट द लूप, रिजल्ट ऑफ एरर 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 up to the कंडीशन, वहां तक जितने भी इंडेक्स वैल्यू थे वहां तक हमारा लूप वर्क कर रहा है। हम तो डायरेक्टली SYSO के यूज करके इंडेक्स वैल्यू देकर प्रिंट करवा सकते कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी इंडेक्स वैल्यू हमें फेच करनी है डायरेक्टली वी कैन पुट दैट इंडेक्स वैल्यू इनटू द SYSO एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑन अ कंसोल। अगर सारे के सारे अरे वंस हमें रीड करना है बाय यूजिंग द फॉर लूप वी कैन रीड इट, यस। अगर यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे तो क्या होगा गाइस, इसमें अगर ब्रेक यूज कर रहे हैं, ब्रेक अभी 1 से एग्जीक्यूट होगा ना उसके बाद स्टॉप हो जाएगा क्या प्रोग्राम हमारा, उसी रिजल्ट क्या आएगा 101, ब्रेक मींस एग्जीक्यूशन स्टॉप, मींस हमने फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट यूज किया, कंट्रोल दी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो फ्लो था हमारा एग्जीक्यूशन तक, तो कहाँ तक चलने वाला था, 9th वैल्यू तक चलने वाला था, तो उसे हमें कंट्रोल करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज, अभी ब्रेक लगा दिया मींस कंडीशन फॉल्स होने से पहले इसे स्टॉप कर दिया एग्जीक्यूशन, बाहर आ गया उस फॉर लूप से। ओके,
वो डिफरेंट लॉजिक, मतलब कोई कुछ भी लॉजिक हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वन एलिमेंट बाय वन एक्सेप्टिंग द वन एलिमेंट हम वो भी कर सकते हैं, तो उसके लिए लॉजिक इंप्लीमेंट करना होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, ring the array elements by using a for loop. Take a screenshot. Yes, completed guys. Yes sir. Okay. How many types of arrays in Java programming guys? One dimensional array and two dimensional arrays. Two ways we create the array. We use the arrays in Java programs. एक वन डायमेंशनल array मीन्स जो भी हमने सीखा है ना वो है वन डायमेंशनल array. दूसरा होता है कि मल्टीपल डायमेंशनल array, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल array within an array मीन्स जॉग्ड array उसे कहते हैं हम जॉग्ड array. array within array होता है, जैसे हम मल्टी डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल. जैसे कि मैट्रिक्स सीखा है ना हम लोगों ने मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स अगर प्रिंट करना है तो उसमें हम टू डायमेंशनल आ रहे हैं, थ्री डायमेंशनल आ रहे हैं, डिपेंड्स ऑन आवर मैट्रिक्स वैल्यू, उसका यूज करते हैं. नाउ अब ये तो देखा हमने प्रिमिटिव वैल्यू का. अगर हमें रेफरेंस एरे मींस ऑब्जेक्ट एरे बनाना है, एरे ना प्रिमिटिव का भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट एरे भी बनता है. अब दिस इज द डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन. सेकंड होता है कि देखो कि हम और किस तरीके से हम क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एरे इन जावा प्रोग्राम. हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ एरे इन जावा. हमेशा ना आप क्या करना है, स्टैंडर्ड वे मींस कोई भी अगर होते हैं ना प्रॉपर करली ब्रेसेस ओपन एंड करली ब्रेसेस क्लोज ऑफ अ क्लास, उसके बाद फंक्शंस अगर कोई यूज कर रहे हो आप तो उसका भी एक प्रॉपर दिस सीक्वेंस में ले लो. ओके. अगर कभी कभी क्या होता है कोई प्रोग्राम मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा होता है, नीचे क्लोजिंग होता है. अभी स्टार्टिंग में होना नए नए हो तो यहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेके आ जाने का उससे तो समझ में आता है कि क्लास बॉडी फंक्शन बॉडी. ओके. सो इंट ए array is equal to new int. Okay. यहाँ पे क्या होता है कि कंपाइलेशन एरर. यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं array का ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड. न्यू कीवर्ड कब यूज करते हैं, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ array. ओके. कभी भी अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, want to create the object of a class, object of a array, then we use the new keyword guys. By using this new, which thing is necessary there, there is a compilation error. Few error आ रही है guys. Why we are getting the compilation error, compile time error क्यों आ रही है? Which thing is necessary there to make size of a array. इसका syntax क्या होता है guys, size. तो यहाँ पे हमने size लगा दी 4. तो अब ये हुई हमारी साइज किस टाइप की होगी, स्टैटिक करके हो जाएगा. ओके. अब यहाँ पे हम इन बिटवीन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हम साइज इंक्रीमेंट कर सकते हैं जिसकी डायनामिकली कर सकते हैं. कभी भी इंक्रीमेंट होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि वंस हमने वहाँ पे साइज मेंशन कर दिया. वेयर मेंशन इट वंस एट द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एरे. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया है तो साइज नेसेसरी है, मैंडेटरी. अगर साइज नहीं प्रोवाइड करेंगे हम, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी साइज ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ एरे ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे कंपाइलेशन एरर आएगी. वेरिएबल मस्ट प्रोवाइड आइदर डायमेंशन एक्सप्रेशंस और एन अरे इनिशियलाइजर. यहाँ पे आपको एक साइज डायमेंशन उसका मेंशन करो या तो इनिशियलाइज कर दो. ये तो हुआ हमारा फर्स्ट फंडा.
Now see ये कैसे हुआ, how to create a array objects. Syntax क्या होता है, data types, then array name, okay, is equal to new data type, data types, okay, size, okay. ओके ये हुआ हमारा सिंटैक्स। दूसरा एक सिंटैक्स होता है कि अगर हमें साइज नहीं देनी है, डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज कर देनी है, देन यूज सेम सिंटैक्स विद द वैल्यू, डेटा टाइप्स, array name equals to new data types, size, and opening and close brackets. Here we pass the values, value 1, value 2, okay. How many values we are trying to use over there. Look, यहाँ से हम this way we create the object of array, okay. Then उसे अगर declare यानी initialize करनी है value, तो second syntax use करते हैं. Now with the first syntax यहाँ पे necessary क्या होगा, size of the array is now where, अब इसमें साइज तो दे दिया हमने, एरे बना दिया, एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, ए नाम का एरे बन गया है, राइट. तो वहाँ पे वैल्यू है क्या गाइस, आप इज देयर एनी वैल्यू इन आवर एरे, देयर इज नो एनी वैल्यू, देन हु प्रोवाइड द एनी वैल्यू, व्हिच काइंड्स ऑफ वैल्यू इज प्रोवाइडेड देयर. अब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमने सीखा है कि जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है. अगर हम एरे बना रहे हैं तो एरे का किस टाइप का एरे बनाएगा, इस इंटीजर टाइप, प्रिमिटिव टाइप बनाएगा. तो प्रिमिटिव टाइप बनाए तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी इस इंटीजर की, 0 करके रहेगी, राइट. अब नाउ वी आर रीडिंग दिस यूजिंग फॉरवर्ड, उसका रिजल्ट क्या आएगा, int I is equal to 0, I less than a dot length I plus a of I. a of I मीन्स I की वैल्यू क्या रहती है, तो होगी 0 0 से इंक्रीमेंट होते रहेंगे. Okay, 0 0 0 regarding to the types of array. किस टाइप का array हमारा गाइस, इंटीजर टाइप है. अगर स्ट्रिंग टाइप array अगर यूज करते हैं गाइस हम, नाउ सी नेक्स्ट, या इतना स्क्रीनशॉट ले लेना तो इस प्रोग्राम का, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. हो गया. यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग लगा देते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, क्लास होती है, क्लास है हमारे को जावा की क्लास, which is used to represent a collection of characters. अब क्या आएगा रिजल्ट गाइस, व्हाट इज द आउटपुट, null. String is a first class object in Java. String क्या है, क्लास है हमारे जावा. अगर क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अभी वो हमारा नॉन प्रिमिटिव आ रहे हैं, किस टाइप का आ रहे हैं, दैट एरे इज अ नॉन प्रिमिटिव एरे. For objects of a strings were created by using the array. So 4 times का output क्या रहेगा, null. For every object of a string, JVM provides the value as a null. JVM considered string is a class, and class array बनाया तो उसका by default value क्या है, null. Okay.
int array a is equal to new int array. So how to assign the values? How to assign the value a of a array of 0 index पे क्या वैल्यू स्टोर करवानी है 10. ओके ठीक है. a of 1 of 1 is equal to 20. Array में how can assign the initialize the values for the array if you are creating by using a new to index value, go to the index 30. कहाँ तक इंडेक्स स्टोर करेंगे 0 to 3 size -1. What is the size of the array? 4 is the size, -1 means 3. It work up to the 3 index value equal to 40. ओके ये हमने वैल्यू किस में असाइन कर दिया गाइस? इन एरे. 4 साइज का एरे बना था उसमें हमने वैल्यू लोड कर दी. असाइन कर रहे हैं उसको वैल्यू बाय यूजिंग द इंडेक्स a of 0, a of 1, a of 2, a of 3. This way that will be assigning the value where initializing the values to the array. क्या भी इससे रीड करना है तो वही हमारा सेम फंडा. जैसे कि आप सीसो अगर यूज कर रहे हैं a of i कर a of 0 करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा प्रिंट होके गाइस? रिजल्ट आएगा है. इसे फॉर लूप से रीड कर सकते हैं गाइस ये सारी वैल्यूज हैं. Can we read it by using the for loop? Now see, for y is equal to 0 less than, हमें साइज तो पता है 4 है 4. अगर नहीं पता है तो ये डॉट साइज लेंथ कर देते हैं. ओके नहीं प्लस प्लस इसे कमेंट कर देते हैं. ओके double slash is used for a single line comment. Known as Java application. What is the output? 10, 20, 30, 40. यहाँ से वैल्यू सारी असाइन होगी इंडेक्स वैल्यू पे वो लोड हो गए लोडेड इनटू द मेमोरी. उसके बाद हमने उसे रीड किया बाय यूजिंग द फॉर लूप. ओके अब नेक्स्ट होता है कि फॉर ईच लूप करके होता है. वी कैन यूज for each loop for reading the values by fetching the values of an array. 1.5 वर्जन 5 वर्जन से for each हमारे जावा में इन्वेंट हुआ was added into the JDK 5. अब देखो कि वो for each loop किस तरीके से यूज होता है. जनरल for loop से वो इजी है. ट्रेडिशनल for loop मीन्स जो पहले से हमारा यूज होता है जावा में ट्रेडिशनली. देन for यहाँ पे आप किस टाइप की वैल्यू है गाइस? इंटीजर वैल्यू है. यहाँ पे हमें एक नया वेरिएबल बना लिया डबल कोलन. अब एरे नेम क्या है हमारा? ए. सारा का सारा ए का वैल्यू किस में स्टोर कर दिया गया हमने? नए वेरिएबल में जो कि ये बना हुआ है. बट अभी से रीड करना है तो ऐसा. ओके इससे आउटपुट क्या मिलेगा? नाउ वी आर कमेंटिंग इट. अब मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट करना है तो सिंगल स्लैश देन स्टार एंड कहाँ तक करनी है हमें? इस लाइन तक. तो स्टार एंड सिंगल स्लैश. See what is the output of this program? All array value is converted into the new variable a. What is the result? 10, 20, 30, 40. सारा जो array का रिजल्ट है array values है a में ना अभी. now what is the name of the array? A is the array name. and सारा का सारा डेटा है 10, 20, 30, 40 वैल्यूज. तो सारे के सारे किस में हो जाएंगे गाइस? फॉर इच लूप में मींस एवरी वैल्यू ईच वैल्यू इज लोडेड इनटू द न्यू वेरिएबल दिस वेरिएबल ए. तो किस टाइप वाला? इंटीजर टाइप. तो उसमें स्टोर होगा. जिस टाइप का एरे है ना हमारा इंटीजर टाइप एरे तो हमने उसे इंटीजर में
कन्वर्ट किया। अगर यहाँ पे आप लगा देते हो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में शायद बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीजर मिसमैच बताएगा, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम एलिमेंट टाइप इनटू स्ट्रिंग, नहीं कर सकते हम इसे, टाइप कास्टिंग यूज करनी होगी वहाँ पे, या तो चेंज द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल, इस टाइप के वैल्यूज मूव कर रहे हैं हम गाइस वन बाय वन, इंटीजर टाइप, तो इंटीजर टाइप डेटा टाइप सेट करो। फॉर ईच लूप का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू है, फॉर एवरी वैल्यू, फॉर ईच वैल्यू, इज वन बाय वन मूव इनटू द दिस न्यूली वेरिएबल, क्रिएटेड न्यूली वेरिएबल। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू या कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी एरेज वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर हो गई है, वन बाय वन स्टोर हो रही है। तो इसका रिजल्ट 10-20 जैसे जो भी सीक्वेंस होगी, सेम सीक्वेंस का हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है गाइस आप लोगों का सभी का? यस, हाउ टू now guys, how to copy the array, one array into the another array, how we can copy the arrays in Java programming, we'll see now. Firstly we create one array. Hello, array a is equal to, now we have initialize it first, initializing it with values 10, 20, 14, 15. Now where initialize, tell me what is the size of the array guys, int size of array is equal to a dot length. Okay, size is calculated and placed into holder into the size variable. Now I want to call this, I want to copy a array into the b. How we can copy it into the b? First we have to declare we have to create a one array. Now we are created this int b array. So how we can copy all the elements of the array a into the b, directly assigning to the b. Now b of array is equal to a. This way all the elements of a array is copied into the b guys, all the elements of the a array, whatever elements available into the a, all these elements are copied into the b element. So what type of array is guys, which kind of this array, integer array. Okay, so integer array is copied into the only integer array. Can we copy it in another? What happen if you are trying to that thing, c is equal to a, is it possible? It is not possible because type mismatch, integer array हम string array में copy नहीं कर सकते. Okay. How many elements in the array guys? 5 elements into the array. Size of the array is a 5 and index value, last index is a 4, size minus 1. Okay, read it. Yes, why so now a of 0. Now what is the answer of this line, sir guys? What is the output of this line? What is the answer of that line? Now see, अब output क्या आएगा guys यहाँ पे 10, right? It is from which array? A array, right? अब next हम कहाँ से आंसर फाइंड आउट करवा रहे हैं guys? Now we are fetching from a B array. B array की 0 index पे, what is the value of 0 index of B? 10, because हमने कॉपी किया है, A array is as it is copied into the B, तो B का 0 इंडेक्स का भी वैल्यू क्या रहेगा? 10 ही रहेगा, राइट? इस इसमें मेमोरी में किस तरीके से बनेगा गाइस? बोथ द वेरिएबल्स पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन, सेम एरे एलिमेंट्स. सी यहाँ पे देखो कि इंडेक्स वैल्यू हो रही है 10, सेम को हम यूज कर लेंगे, रीयूज कर लेते हैं.
यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, पहला एरे, व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे, ए, राइट। दूसरा एक एरे नाम बना दिया, ए को कॉपी किस में कर दिया है, एग्जैक्टली वेयर कॉपीड इनटू द बी एरे। तो बी एरे भी किससे पॉइंट करेंगे गाइस, सेम मेमोरी को, सेम एलिमेंट्स को। वहां पे डिफरेंट कॉपी बनेंगे क्या इनसाइड द मेमोरी गाइस, इन रैम 2 कॉपीज बनेंगे क्या फॉर एवरी एरे, नहीं बनेंगे, एक ही कॉपी है, तो दैट कॉपी इज शेयर्ड अमंग द 2 एरेज। अब सेम कॉपी क्या कर रहे हैं, शेयर हो रही है यहाँ पे, बी भी सेम एरे को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि ए रिप्रेजेंटिंग दिस दैट एरे, अगेन ए इज कॉपीड इनटू द बी, तो बी में उसे कॉपी किया है, तो बी भी किसे रिप्रेजेंट करेगा, सेम एरे लिस्ट को। ओके, अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है गाइस, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस देयर नाउ। अब ए array is pointing to the same values, okay, and again which variable is pointing to the same value, b array is pointing the same value। तो अगर we are changing some values by using the index of a, so it will be reflect on a b array guys। अब ये देखो एक ही कॉपी बनी है, उसे ही रेफर कर रहे हैं बोथ द अरे नेम अरे वेरिएबल्स, तो उसमें ए से अगर हमने कुछ चेंजेस कर दिया, इंडेक्स वैल्यू 3 पे हमने ना 40 है तो 400 कर दिया, तो वो किस पे रिफ्लेक्ट होगा गाइस, उसका इफेक्ट किस पे आएगा, बी पे भी आएगा, बी के लिए भी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, जो इंडेक्स वैल्यू 3 पे 40 थी वो वैल्यू आप क्या हो जाएंगी 400 हो जाएंगी। तो ये बना डिसएडवांटेज। अगर दिस थ्रू वी कॉपी द एलिमेंट्स, अब आ रहे अगर हम इस this way if we are copying the elements of array into the new array, this way, okay, that way we are copying the one array into the new array। तो उसमें क्या हुआ कि पहले array में अगर if we are changing something some values in a previous array, it reflects on a newly array, तो किस पे रिफ्लेक्ट होगी, न्यू एरे पे। जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, नाउ वी आर चेंजिंग द वैल्यू ए ऑफ 3 इंडेक्स, कितना रखा है वैल्यू इज इक्वल टू 100, आपको 100 कर दिया। तो अभी किसके लिए चेंज किया गाइस, वी आर चेंजिंग वेयर न्यू वैल्यू इज असाइन्ड ऑन इंडेक्स, तो ए आ रहा गाइस, ए की वैल्यू हमने चेंज कर दी, बट इट इज रिफ्लेक्ट फॉर आल्सो बी। अब इसमें ना वैल्यू क्या रहेगी, आप एसओ, अब हम देखते हैं कि बी इंडेक्स वैल्यू 3 पे, 3 इंडेक्स वैल्यू पे क्या वैल्यू मिलती है, प्रीवियस वैल्यू क्या हमारी इंडेक्स 3 की 0 1 2 3 40 हमारी वैल्यू है। यहाँ पे रिजल्ट क्या आना था, नाउ सी लुक व्हाट इज द रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट बी ऑफ 3, sorry b of 3 result is a 40। now let's see executed, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा 40 आ रहा है। आफ्टर सम चेंजेस, आफ्टर दिस सम चेंजेस इन वेयर इन एरे ए, जो एरे है ना हमारा ए नाम का, उसमें हमने चेंज कर दिया है वैल्यू, वो किस पे रिफ्लेक्ट करेंगे कैसा, भी बी को भी रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पे बी ऑफ 3 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारा, आउटपुट 100 आ रहा है, राइट। तो अगर बी में कोई चेंजेस हुए तो किस पे रिफ्लेक्ट होगा, ए को, ए पे, ओके। ए में कोई चेंजेस हुए तो वो रिफ्लेक्ट किस पे करेगा, बी में चेंजेस होंगे। तो दिस इज दैट वे इज द करेक्ट वे टू कॉपी द एरे एलिमेंट्स। अगर हम इस तरीके से कॉपी एलिमेंट को कॉपी करते हैं, वन एरे टू अनदर एरे, एक एरे से दूसरे एरे में कॉपी कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू कॉपी द एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ना इन आवर लॉजिक in case we will implement some another logic and there be some changes in a b array, तो वो किस पे रिफ्लेक्ट कर देगा, ए पे रिफ्लेक्ट कर देगा। ए में some changes हो गए, if we are some changes with the a array, तो वो किस पे रिफ्लेक्ट होगा, बी पे रिफ्लेक्ट होगा। हम दोनों के array के डिफरेंट लॉजिक में हम इसे यूज कर पाएंगे गाइस, we are not use that same thing in different logics। if we are going to implement with a different logic, तो उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्ट अगर हो रहा है सेम, तो उसमें लॉजिकली एक्सेप्शंस हमें मिलेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे वैल्यू है ना
440 होनी है बी थ्रू द बी, बट वो रिफ्लेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन ARA, बिकॉज ऑफ चेंजेस ऑफ ARA। तो ARA का चेंज किया हमने तो वो रिफ्लेक्ट बी पे भी कर रहा है, तो हमें नॉट नेसेसरी, हमें वो नहीं चाहिए। तो इससे तो हमारा लॉस हो रहा है, मतलब दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कॉपिंग एलिमेंट। ओके, दिस इज द बेसिक थिंग टू कॉपी द वन एरे इनटू सेकंड एरे। जब भी कोई नया एरे है उसमें अगर कॉपी करना है प्रीवियस एरे, तो इस तरीके से हम इसे कॉपी कर सकते हैं। उसका लॉस डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि हम प्रीवियस एरे में कोई चेंजेस करेंगे तो वो नए एरे में रिफ्लेक्ट कर देगा, अगर न्यू में कोई चेंजेस करेंगे तो प्रीवियस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। न्यू में अगर करेंगे तो प्रीवियस में होता है क्या गाइस? डू इट प्रैक्टिकली, आई थिंक सो, बट वो सेम मेमोरी लोकेशन को अगर रिप्रेजेंट करता है तो होना ही चाहिए, इज इक्वल टू 100। अब 100 वैल्यू ए में भी चेंज होगी क्या गाइस? अब बी में तो चेंज हो जाएगी, 100 100 के जगह 100 मिल जाएगा रिजल्ट में। ओके 100 मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ए ऑफ 3, ए ऑफ 3, अगर वहाँ चेंज हो रहा है तो ये के लिए भी रिप्लेट 1000 आउटपुट। ओके, क्योंकि एक ही मेमोरी है ना, शेयर हो रही है दोनों के लिए भी, फॉर बोथ द एरे। ए के लिए भी सेम मेमोरी लोकेशन शेयर हो रही है, बी के लिए भी सेम मेमोरी लोकेशन हो रही है, सेम लिस्ट इज शेयर्ड अमंग बोथ द एरेस। तो उसमें कोई चेंजेस करता है, बी चेंज करता है 5 इंडेक्स पे, तो वो किसके लिए रिफ्लेक्ट होगी? ए के लिए रिफ्लेक्ट होगी। अगर ए चेंज करता है तो बी पे रिफ्लेक्ट होगा। ओके, समझ में कॉपिंग एरे? दिस इज अ सिंपल वे। सेकंड वे होता है कि बाय यूजिंग द हम फॉर लूप से भी कॉपी कर सकते हैं, बाय यूजिंग द फॉर लूप। अब फॉर लूप से अगर चेंज कॉपी करोगे तो रिफ्लेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम है ना नया एरे बनेगा, एक नई मेमोरी बनेगी और उसे जो भी नया हमारा बन रहा है एरे वो उसे पॉइंट करेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और 3 ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। कंप्लीटेड। अभी हमें क्या करना है? बाय यूजिंग द फॉर लूप हमें कॉपी करना है। Then we create a new array जिसमें हमें इसे कन्वर्ट करना है, कॉपी करना है। कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं बस। इज इक्वल टू न्यू int। अब यहाँ पे switching is necessary to size the size of that array, mention the size of the array। तो यहाँ पे हमें किसे कॉपी करना है गाइस? ए एरे को बी में कॉपी करना है, तो हम ए डॉट लेंथ मीन्स उसकी साइज यहाँ से हम दे देंगे। ओके, ये बन गया। अब फॉर लूप लगाएंगे, यूज द फॉर लूप। int I is equal to, I कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? 0 से, बिकॉज इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम द 0। देन सेमीकोलन, I is less than a dot length, then semicolon I bracket is open। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? किस में कॉपी करना है? बी में, बी ऑफ आई मीन्स इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू ए ऑफ
आई ए ऑफ आई की जो भी वैल्यू आएगी वो किस में असाइन होते चले गाइस. नाउ all the values from of a of I is assigned to the B. It is in a side in a B, guys. Now this way we can store the all the elements into the B. We are copying a array element, one array into the another array by using the for loop. अब इसमें क्या होगा, जो भी a of I में रिजल्ट आएगा वो सारा किस में स्टोर होते जाएंगे, वन बाय वन, जैसे कि इटरेशंस होते रहेंगे हमारे, वन आफ्टर वन इटरेशन. समझ में आया गाइस यहाँ पे लॉजिक आप लोगों को? यस. Yes, sir. Yes, sir. थ्रू द फॉर लूप. Yes, sir. ओके, इट्स सिंपल. अब यहाँ पे ना कोई वैल्यूज अगर हम चेंज करते हैं तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जैसे कि पहले हम कर रहे थे ना, लाइक दैट नहीं होगा इसमें. ओके.